Welcome to the fourth part of the series. And today the session is on product design, a workshop on product design. Let me introduce Professor Puneet. So Puneet sir has done his engineering, and after that he worked for a few years, and then he went to the dream college of all you design aspirants, that's NID Ahmedabad. He has completed his masters in product design from NID Ahmedabad, and after that he has worked with companies like Adobe and others before he decided to join teaching as a profession to guide all young design aspirants like you all. And today he would be taking the workshop for you on the product design. Over to you, Puneet sir. Thank you so much for the introduction. Just a second. I'm uh, I'm on from two devices, just in case one stops working. Anyway, so dear students, good to see you all. And and today's session, as Abhishek already told you guys, it's going to be about the scope of product design. What product design has shaped up into. Things used to be very different back 30 years ago, 40 years ago, when the design discipline started, when product design started. आज का जमाना बहुत अलग है और आज हम बात करेंगे कि what does it mean to join as a student of product design in this in these sort of times, and what is it that you can realistically expect to work on. तुम लोग कहाँ काम करना sort of तुम्हारे लिए पॉसिबल हो पाएगा अगर तुम लोग product design को as a discipline, if you guys choose that. Yeah, so let's start this. Okay guys, ठीक है. So let's start the presentation, guys. We don't have a lot of time, so I'll try to cover as many things as I can within this limited sort of time span that we have got. So guys, we're going to be talking about the scope of product design, and let's start by a little discovery. एक छोटी discovery से start करते हैं. So the discovery is that you sort of just look around yourselves. And I want you guys to notice that you're living in a sea of objects. ऊपर देखो, you can see a fan, maybe an AC, maybe a few lights. नीचे देखो, तुमने स्लीपर्स पहन रखे होंगे, शूज पहन रखे होंगे. सामने देखो, तुम्हारे लैपटॉप पड़ा है, मोबाइल पड़ा है. You're sitting on a chair. Your laptop is sitting on a table, maybe. तुम्हें भूख लगती है, तुम किचन जाते हो. किचन में भी there are variety of boxes, variety of things you can cook on, variety of things you can cook with. Simple things like knife, things that you eat with, plates. There are a lot of things which make up your hobbies as well. For example, those of you who have a hobby of traveling, you might recognize a few of these things. So products, or so to say objects, they help your lives in a million ways every day. They make your hobbies possible. Whether it is photography, which is centered around an object called camera, whether it is running, you can run without shoes, but then it is always better to run with shoes. There are entire sports which are centered around some object, For example, badminton, tennis, football. अगर वो object नहीं होता है, तो उसके बिना वो possible नहीं होते हैं. Frisbee. In the night, we have nothing to see the world with. So in the night, there are a lot of variety of objects which exist to make, sort of the world available to us. तो हम देख भी नहीं पाते. Simple यहाँ पे लालटेन दे रखा है, night lights. Earlier, civilization evolved around these popular rivers: Ganga, Nile, Yangtze, Thames. ये पुरानी जो रिवर्स हैं, इनके अराउंड पहले सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई थी. आज हमें पता भी नहीं है हमारे पास नियरेस्ट नदी कहाँ से है. हमारे जो नल में पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है पता भी नहीं होता.
मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और जब पानी हमारे घर पे आता है हम उसे स्टोर कर लेते हैं, दैट इज आवर रिवर। मैजिकल ऑब्जेक्ट्स विच आर मेकिंग दिस पॉसिबल। पहले कभी सिविलाइजेशन में इतनी आसानी से पानी अवेलेबल हुआ नहीं जितना तुम्हारी और मेरी सिविलाइजेशन को आज अवेलेबल है। सिंपल थिंग्स, थिंक ऑफ ऑल द क्लोथ्स यू वेयर। सर्दियों में, गर्मियों में अलग अलग, स्पोर्ट्स खेलते वक्त, those specialized shoes which you use for trekking, all your musical instruments. If you guys, sort of like playing this thing, all of them are objects and products. किसी ने बनाए हैं. And remember the time when you used to, sort of pester your mom and dad to really get that thing. मुझे गिटार चाहिए, मुझे shoes चाहिए. So sometimes our love for these objects, it goes to a level of obsession. Now, obviously, obsession is not really, sort of a great thing, but that is what that kind of emotions these objects evoke in us. That kind of, sort of emotion. Let's look at a few objects from our chosen discipline, design. हमारा डिजाइन का डिसिप्लिन भी it is enabled by a lot of objects. Now those could include, the simple, pen and pencil and our markers, scale, प्रकार जो होता है, even our computers and laptops, all the different kind of stationery that we have. It might include our headphones as well, and a million other things. So even our own profession is enabled by all these designed objects, designed products. Now these products can be digital in nature. Photoshop is a digital product. All these apps which you use are digital products. But still they enable one or the other features, sort of which you, utilized in your daily lives. So what all do product designers do? जितने भी तुमने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे देखे हैं, किसी न किसी डिजाइनर का हाथ उनको लगा हुआ है. इनफैक्ट एक नहीं, बहुत सारे डिजाइनर्स का हाथ उनको लगा है. And now going ahead, you have the opportunity to shape up the lives of millions of people. You have the opportunity to do that. And we're going to see what all ways can product designers shape up the lives of these, sort of millions of people, Let's go and, sort of dive a little bit deep into that. But before we do that, what I want you guys to do is, I want you guys to sit and for 5 minutes, just make a list of 15, 20, 30 you have around. एक simple pen and pencil तुम्हारे पास जो है. And in 5 minutes, just make a list of objects which you see around. अपने आसपास बस नजरें घुमाओ. Just see what all objects do you see around. ठीक है? So please do that.
Okay, guys. So did you make a list of objects? Yes, sir. Can you type a few objects or say it out loud? बताना क्या क्या तुम्हें what all would you find around you? You can tell me. You all get chat box. I would love to have a look at it. So a simple dustbin, you know. What else? Toy car. Mask, Hriday Singh, Ravindra Singh, umbrella, switches, laptop, table clock, tube light, torch, speakers. Now all of these things give you superpowers, you know, so to say. See, रात को there's no living being, you know, sort of which, you know, sort of except for a very very few nocturnal beings, क्योंकि रात को देख सकते हैं. लेकिन हमारे पास ये सुपर पावर है कि 10 रुपए के सेल लगाओ and in the night we can, you know, sort of probably have a look at things. Now all these objects give you some sort of superpowers, you know. Look at television. You can look at things remotely, you know, which are happening millions of miles away, sort of through this little box. Photo frames, you can store your memories along with you. No other, you know, sort of animal has this power. Now all these superpowers are enabled by design. Design ये सारी superpowers तुम्हारे लिए enable करता है. अभी आजकल ये जो छोटी छोटी चीजें हमारे आसपास हैं, ये 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की, 25 रुपए की, 50, 100, 500 रुपए की आती हैं, तो हमें इनकी ज्यादा वैल्यू नहीं है. बचपन से हम लोग इनको देखते रहते हैं. But all of these things, they enable some sort of a superpower that we human beings now enjoy. ये सिंपल सी जो नोटबुक और पेंसिल है, ये एज अ टेक्नोलॉजी वाज नॉट अवेलेबल मिलियंस ऑफ इयर्स अगो. तभी हमारे जो एंशिएंट पीपल थे, यू नो, दे डिड नॉट हैव कॉपीज ऑफ ऑल दीज एंशिएंट बुक्स. वो अपनी किताबों को याद करके रखते थे. बट थैंकफुली वी हैव दिस टेक्नोलॉजी विद अस. यू नो, वी कैन मेक मार्क्स ऑन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर. इवन दैट सिंगल पीस ऑफ पेपर तुम्हें पता भी नहीं कहां से आ रहा है, कौन सा पेड़ कटा है, किसका पल्प कैसे करके इतना प्यारा सा छोटा पतला सा स्लाइस होके कैसे आ रहा है. It's a difficult process. Some of you might have seen it or known it, you know. Some of you might have made a paper as well. Simple things. Simple things. Fan. मतलब we have control over nature, parts of nature now. हवा वैसे अपनी मर्जी से चलती है. But now we can control that. We can control electricity, which is a very, you know, sort of a very raw energy. We can control that. And we can, you know, sort of and all of that is, this is enabled by one or the other, you know, some sort of object which we, you know, sort of have designed. So maybe you guys can join into the tribe and create such magical objects. We'll proceed. I think all of you guys got the purpose of this size. Just to be aware, you know, sort of all the things that we live around. हमारे आसपास कितनी चीजें रहती हैं, हम लोग उनको we just take it for granted most of the times. But let's not take it for granted. So let's see what all can you guys do, you know, what all do product designers do. And let's go to one of the major disciplines which product designers engage in, which are consumer durables. क्या क्या आता है अपने घर पे? टीवी होता है, फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होती है, माइक्रोवेव होता है, टोस्टर होता है, कॉफी मशीन होती है, all sorts of different, you know, sort of consumer durables. And all these big companies like, you know, Samsung, like LG, like Whirlpool, and all these other top companies, they're looking for people like you to design their products. Now, ऐसा नहीं है कि ये आज डिसिप्लिन चालू हुआ है. Even in the times before, you know, you guys were born, all these objects used to come. उनका format थोड़ा अलग था, उनकी technology थोड़ी अलग थी, but these were as desired as you guys desire your own objects of your own generation. तुम लोग अपने मॉम डैड के जैसे पीछे पड़ते हो ना, अभी मुझे नया मोबाइल फोन चाहिए बिकॉज उसमें फलाना है, डिकाना है, उसमें डॉल्बी सराउंड साउंड है, उसमें इतने जीबी है, उसमें इतना कैमरा है. वैसे ही तुम्हारे जो पेरेंट्स थे वो भी अपने मॉम डैड के पीछे पड़ते होंगे, मुझे इसमें ये चाहिए, क्योंकि इसमें AM है, FM है, इसमें इतने सारे स्टोर सकते हैं चैनल्स. आई रियली वांट दैट. So human desires have been fulfilled by you know, sort of designers like you and me since ages.
Now the forms have changed. अभी जो फॉर्म है वो ट्रांजिस्टर हमें नहीं चाहिए, वो रेडियो हमें नहीं चाहिए, हमें आईपॉड चाहिए. एंड वी लुक एट थिंग्स इन अ वे कि हम इसमें कितने सारे सॉन्ग स्टोर कर सकते हैं, एंड इट इज ऑलमोस्ट अ लाइफस्टाइल एनेबलिंग प्रोडक्ट. So, but the idea itself has not changed, and the people behind have not changed. वही लोग जो एक जमाने में पुराने डिवाइसेस बना रहे थे, जो कि हमने यहाँ देखी हैं, वही लोग मोटा मोटा वही लोग ऑलमोस्ट sort of with an addition of a few new minds like you and me, they are making these objects. क्योंकि काम भी सेम ही करते हैं. You can listen to music portably. ठीक है. So all these objects are being are enabling a certain kind of behavior, a certain kind of sort of a lifestyle, and behind these objects sit designers like you and me. तुम लोग ट्रेनिंग में हो, मैं शायद थोड़ा सा आगे निकल गया हूं. But think about it, someday down the line you will hold the power to create such objects which can define entire generations and which people can crave for. You guys might have the opportunity to sort of design something which will sort of really change the world, which people really want. So you can have that opportunity if you guys train yourself well enough. These can be object of desires, sort of जिसको खरीदने के लिए लोग साल साल भर सेविंग करते हैं, तब जाके लोग खरीद पाते हैं. हर साल नया नया इसके फीचर्स अगर लॉन्च होते हैं तो वो अपने sort of ऑब्जेक्ट्स को अपडेट करते हैं, नए नए ऑब्जेक्ट्स खरीदते हैं, पुराने वाले सेकेंड हैंड बेच के कुछ करके. And people share a very strong sort of relationships with their own objects, and these objects enable very different kind of behaviors. For example, जो बंदा शायद रनिंग बहुत ज्यादा नहीं करता हो, it is possible that after getting some sort of a motion tracking or a running tracking device, activity tracking device, he might start exercising and he might change his own sort of health and future maybe. All these different kind of behaviors, you can stay connected with your friends in all sort of different ways. You can track your health, you can track your heartbeats, you can get notified if your heartbeat is being erratic, you can take calls from a little watch, you can flaunt it around. So all these kind of behaviors are enabled by objects around us, and you can be designers of such objects. Now these objects have been around for generations. Obviously तुम लोगों ने पुरानी जनरेशन की वॉचेस देखी होंगी, लेटेस्ट जो आई वॉच आई हैं वो भी देखी होंगी, एप्पल वॉच. ऐसे ही जो ऑब्जेक्ट तुम सबसे ज्यादा आई कैन सॉर्ट ऑफ से आर्ग्यूएबली यूज करते हो, मोबाइल फोन तुम्हारा, तुमसे बहुत लोग उस पे बैठे ये लेक्चर भी सुन रहे होंगे. That has also evolved sort of in a very fundamental way. Sort of अभी ये फुल फ्लेज कंप्यूटर बन गया है. पहले ये जो इनिशियल डिवाइसेस व्हिच यू कैन सी, यहाँ पे ये बस एक मोबाइल सॉर्ट ऑफ टॉकिंग डिवाइस था, एंड ओवर टाइम इट इज मॉड्यूलेटेड इनटू अ मोबाइल कंप्यूटर टू द एक्सटेंट कि तुम मोबाइल कंप्यूटर पे वो सारी चीजें नहीं कर सकते जितनी चीजें तुम इस पे कर पाते हो. इट हैज so many sensors which enable so many different kinds of behaviors. Plus you can always have it inside your sort of pockets, and you can carry the internet with you. So all these new technologies are being embedded into this thing, and just a powerhouse in our pockets, designed by people like you and me. If you choose to be product designers, you can literally you can sort of create a revolution. जैसे कि यहाँ तुम्हें दिख रहा है in this particular image, you can be behind that. You can work for one of these companies like Apple, Samsung, and Xiaomi, and all these companies. They have product designers working for them, shaping the future of devices. तो कल को अगर इसके नीचे 2 devices और लगी होंगी ना फ्यूचर में, तो people like you can be responsible for that and be a part of that. And these are a few companies, with an exception of Tesla. मैं इसका लोगो हटा नहीं पाया था, but with an exception of Tesla, this is what sort of you guys can look at working. ये सारी consumer durables बनाने वाली कंपनियां हैं, and you can maybe work for these companies. Not exactly consumer durables, but in a way,
वॉशिंग मशीन नहीं बनाती है, बट इवन लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, देर ऑल्सो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. दोज हेडफोन्स विच यू आर यूजिंग, सोनी के जो हेडफोन्स है, तुम्हारे जो प्रिंटर है एचपी का, वो भी एक कंज्यूमर ड्यूरेबल है. एंड यू गाइस कैन sort of shape the future of these devices by sort of working for one of these companies. ठीक है. So this is one of the aspects of which you can sort of go into consumer durables. Now one another aspect is related to a larger field, a larger field. Now technology continues to give us superpowers. How many guys have you heard of 3D printers? Please raise your hands. 3D printers का नाम सुना है? Who else? सुना है? Please keep your hands raised. 3D printers का नाम सुना है? कभी न्यूज़ पढ़ी है उसके बारे में? Great, great. So have you guys? Please lower your hands. Thank you so much. Actually, I'll lower from here, maybe. Please lower your hands. Achha, have you guys heard of 3D printed buildings? Raise your hands if you guys have heard of 3D printed buildings. पूरी buildings, पूरे apartments, पूरे घर आज 3D print हो रहे हैं. Do you guys know that? Let me show you guys. अभी रिसेंटली केरला में एक हाउस 3D प्रिंट हुआ था, वो जो कि इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस है. Now the future is coming where अगर तुम्हें घर बनाना है तो तुम एक मशीन को अपने घर के प्लॉट पे you can just leave it there for 2 days, 3 days, and your entire house can be created. These are all Punit sir, your voice is cracking. These objects which are inside our home. My voice is cracking. Just a second. I'll use this thing for only for my presentation. I'll use the other devices for just a second, guys. मैं अपना एक सेकंड इसको ओके. अभी क्लियर है क्या? इज इट क्लियरर नाउ? यस सर. Yes, sir. अभिषेक आप म्यूट पे हैं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, perfect. Okay, guys. So I'll present my screen again and we'll continue. So मैं कह रहा था, ना सिर्फ तुम्हारे घरों के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, बल्कि आजकल जिन चीज तुम्हारा घर बनता है, वो सारी चीजें भी किसी ना किसी ने डिजाइन की है बैठ के. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस जेसीबी. रेज योर हैंड्स if you guys have seen JCB somewhere around. देखिए. So it's like a mobile hand which have, ये जो पीछे तुम्हें आर्म दिख रही है ना, it's like a mobile hand, a large hand through which हम लोग मिट्टी खो सकते हैं, चीजें यहाँ से वहां कर सकते हैं. We can move huge, sort of size of rocks, sort of. So all these kind of behaviors are enabled by these devices, and you can choose to work for companies like JCB and John Deere, a lot of these industrial equipment manufacturing companies, through which you can sort of enable an entire industry. And जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि वो जो 3D प्रिंटर है जो कि पूरा घर प्रिंट कर देता है, इट्स अ वेरी लार्ज डिवाइस, बट इन द एंड दैट इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, एंड यू कैन चूज टू बी डिजाइनर्स ऑफ सच प्रोडक्ट्स. जो कि एक घर को, जैसे मान लो आज अगर 4 दिन में कोई एक घर प्रिंट हो रहा है, तो टुमारो इट कैन बी प्रिंटेड इन हाफ एन आवर.
और डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ये एनेबल करने वाली है. So you can be part of such companies which enable and which build such products, and you can be, sort of part of such companies which make such industrial equipments. अच्छा, raise your hands if you guys are following till now. अभी तक तुम्हें समझ में आ रहा है मोटा मोटा कॉन्सेप्ट्स, कहाँ कहाँ तुम लोग काम कर सकते हो. If you guys are getting it, good guys, good. Who else? Awesome guys, awesome. Got that. Thank you so much for contributing. Okay guys, थोड़ा आगे चलते हैं. Then there are a lot of industrial products, lot of industrial products. यहाँ पे हमने industrial equipments की बात की थी, but we can also talk about industrial products. Now who can tell me कि यहाँ पे जो screen पे फोटो दिया हुआ है वो किस चीज का है? Disc brake. Disc brake, perfect guys. So all these large products like cars and sort of bikes and even TVs and all these sort of ACs and washing machines, इन सब के अंदर जो प्रोडक्ट्स जाते हैं वो सब भी किसी न किसी के द्वारा डिजाइन किए हुए हैं, including all these parts which are supplied by other companies to sort of automobile companies like disc brakes. तुम्हारी जो आगे पीछे की लाइटें होती हैं, तुम्हारा जो स्टीयरिंग व्हील होता है, तुम्हारा जो म्यूजिक सिस्टम होता है कार के अंदर, वो सारी तुम्हारी जो सीट्स होती हैं, सीट्स में भी अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है. सो ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ डिजाइंड ऑब्जेक्ट्स. शायद इनकी कंपनियों का बहुत फेमस नाम नहीं होता है, एंड बट ये सारे ऑब्जेक्ट्स भी तुम डिजाइन करते हो, तुम डिजाइन कर सकते हो. इन सब के पीछे क्या सॉर्ट ऑफ कंसर्न्स रहते हैं जब तुम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करते हो. सो व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट इज रिलायबिलिटी, कि अगर ये चीज फेल हो गई बिना बताए रैंडमली अपने रेगुलर टाइम से पहले, तो किसी की जान जा सकती है. सो एक्सट्रीमली क्रिटिकल द डिजाइन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स इज. So a designer has to really think about the usage of materials in a way that enables safe operations. कोई कान में लगाने वाला iPod नहीं है. It's a life and death situation. ब्रेक अगर फेल हो गए तो. So what you design for is you design for things to be caught. अगर कहीं ब्रेक में कोई इश्यू आ रहा है तो the brake should tell you. ऐसा नहीं कि अचानक एक दिन फेल हो गया. And these things are designed to fail gradually. Suddenly फेल होने के लिए बनती नहीं है. There are a lot of checks and measures which are put into these things. And just imagine the number of parts that are just like that. Absolutely critical. Absolutely critical. In fact, it's almost like an orchestra of things, Orchestra या फिर तुम लोगों ने जो सिम्फनी रहती है, जो ओपेरा रहते हैं, ऑर्केस्ट्रा रहते हैं, वो सब देखे हैं किसी ने? प्लीज रेज योर हैंड्स if you guys have seen. इवन वीडियो में देखे हो, पिक्चरों में देखे हो, देखे हैं? अमेजिंग गाइस. सी उसमें क्या होता है, इफ यू एक ऑर्केस्ट्रा के अंदर, एक सॉर्ट ऑफ ओपेरा के अंदर बहुत सारे लोग बैठ के म्यूजिक बजाते हैं. लॉट ऑफ पीपल सॉर्ट ऑफ आर प्लेइंग एज अ पार्ट ऑफ दैट बैंड. उसमें से अगर 100 लोग 200 लोग साथ में एक हारमोनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से कोई एक बंदा भी अगर अपना ट्यून को लूज करता है या फिर कुछ गलत बजा देता है, the entire orchestra gets affected and you can immediately make out. Just like that, all these objects are working in symphony. कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर अपना काम सही से नहीं करता है, रिलायबिलिटी नहीं है या फिर काम सही से नहीं कर रहा है, it can really cost your life. So many objects, as you can see, go into a single sort of designed object. हम जो एक कार खरीदते हैं, बट उसमें कितनी सारी चीजें जाती हैं जो कि सारी एक टाइम पे सही काम करती हैं उस कार को चलाने के लिए, रिलायबली चलाने के लिए, ओवर टाइम चलाने के लिए. 15 साल 20 साल तक ये सारे ऑब्जेक्ट्स काम करते रहते हैं. एंड दे सर्व अस थैंक्स टू डिजाइनर्स लाइक यू एंड मी, जिन्होंने इनके डिजाइन के अंदर राइट मटेरियल्स चूज किए हैं, राइट डायमेंशंस चूज किए हैं, इनके लिए पॉलिसीज बनाई हैं कि इनकी रिपेयरिंग कैसे होगी, इनका रिप्लेसमेंट कब होगा. थैंक्स टू पीपल लाइक यू एंड मी जो ये सब काम करते हैं. ठीक है, तो नॉट ओनली द थिंग्स व्हिच यू सी एक्सटीरियर ऑन द एक्सटीरियर, उसके अंदर भी जितनी चीजें जा रही हैं वो सारी भी डिजाइंड होती है. कोई कंपनी कर रही है एंड समबडी इज अर्निंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स जस्ट बाय मेकिंग दोज लिटिल थिंग्स. वो जो रियर व्यू मिरर है,
वो मिरर बना के कोई बंदा करोड़पति हुआ बैठा है, एंड यू कैन ज्वाइन दैट मिशन। ठीक है, वो सनरूफ बनाने वाला बंदा करोड़पति हुआ बैठा है, so you can do that. Now this looks a little gross, but there are a lot of special purpose products like this. हम लोग रोज सुबह दूध लेके आते हैं दुकान से, या फिर अगर तुम्हारे आसपास कोई फार्म नहीं है तो यू माइट गेट इट फ्रॉम अमूल। हमें ऐसा लगता है कि अमूल में कोई बैठा है एक्चुअली दूध निकाल रहा है, बट इन अमूल दे एक्चुअली दीज स्पेशल पर्पस प्रोडक्ट्स विच आर डिजाइन फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस, दूध निकालने के लिए। सो ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स सुनने में अजीब लगता है, बट देन दे एनेबल अ सर्टेन लाइफस्टाइल। आज घर घर में हमारे दूध इज वन ऑफ द sort of very popular sort of eating items which everybody sort of uses, हर घर में यूज होता है। एंड ये सारे प्रोडक्ट्स उस लाइफस्टाइल को एनेबल करते हैं। नाउ वन मोर एग्जांपल दैट यू कुड टेक ऑफ दीज स्पेशल पर्पस प्रोडक्ट्स इज, जैसे कई लोग सी कोस्ट के पास रहते हैं, तो लॉट ऑफ यू गाइज माइट बी हैविंग सॉल्टी वाटर। अब सॉल्टी वाटर पिया नहीं जाता, उससे खाना ही बनाया नहीं जाता है, तो you have in your cities desalination plants. Raise your hands if you guys have heard of desalination plants. Desalination plants नमक हटाने के लिए पानी में से उन प्लांट्स का यूज होता है, पानी को थोड़ा साफ करने के लिए भी उनका यूज होता है। Got that guys? Please lower your hands. Thank you so much. अब उस डिसलेशन प्लांट में डिसलेशन करने के लिए एक सेपरेट मशीनरी लगी है, स्पेशल पर्पस प्रोडक्ट्स लगे हैं जो कि उस पूरी सिटी को पानी सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट जिस दिन मान लो वो खराब हो गया तो पूरी सिटी में पानी नहीं आएगा, और तुम्हें पता है कभी अगर पानी नहीं आता है 5 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए भी, तो हमारी कैसी हालत हो जाती है, बिकॉज वी आर सो डिपेंडेंट ऑन दीज मशीन्स। नाउ यू कैन चूज टू बी अ पार्ट ऑफ सच कंपनी विच develops such extremely reliable and lifestyle enabling products. Now there are lifestyle products and there are also lifestyle enabling products, so you can sort of choose to be a part of that. You can choose to be a part of creating consumables. तुम जब अपने फेवरेट मॉल में जाते हो तो तुम्हें शेल्फ पे जो भी चीजें दिखती हैं जो कि 1 महीने, 1.5 महीने, 10 दिन, 15 दिन में कंज्यूम होने के लिए बनी होती है, those can be shampoos, those can be sort of हार्पिक और ये सब जो चीजें रहती हैं, हमारी क्लीनिंग के जो सामान रहते हैं वो सब रहते हैं। ऑल दीज कंज्यूम, इवन जो हमारे सिंपल झाड़ू और पोंछे वाले जो आइटम्स रहते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स भी कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं। एंड दीज कैन बी वेरी वेरी फैंसी, इनके भी डिजाइन बहुत आजकल फैंसी हो गए हैं। अच्छा, रेज योर हैंड्स इफ यू गाइज हैव हर्ड ऑफ दिस ब्रांड कॉल्ड कामा आयुर्वेदा। Absolutely fancy, sort of brand. Raise your hands. आजकल इस तरह के बहुत ब्रांड्स आ गए हैं। Raise your hands also if you have heard of Forest Essentials, a brand like that. सुना है? Getting it? So these are all consumables. उनके जो perfumes आते हैं, उनके जो sort of cosmetic items आते हैं, they're all designed with great detail, and they're packaged also in a very sort of a detailed manner. And sort of all that packaging, all that productization. See, all that shampoo is just probably एक बार में जब बनता होगा ना एक लॉट में, तो उसका 1000 किलो शैम्पू बनता होगा, या 100 किलो या 500 किलो ऐसी क्वांटिटी बनता है। तो इट इज नॉट रियली प्रोडक्ट, दे जस्ट हैव a fluid which they can call Head and Shoulders. Now what they do is they create a beautiful bottle, a very sort of a specific bottle, and they have a very specific branding for that. So have you guys noticed that अलग-अलग brands की अलग-अलग shape की bottles होती हैं? Raise your hands if you guys have noticed, कि अलग-अलग brands की bottles देखते ही तुम लोग कई बार पहचान जाते हो। हेड एंड शोल्डर्स की जो बॉटल होती है ना, वो साइड से स्लैंटेड होती है, स्लाइटली स्लैंटेड, या तो बहुत बड़ी बड़ी बॉटल सारी, बट दिस पर्टिकुलर कर्व इज वन ऑफ द ट्रेडमार्क्स ऑफ हेड एंड शोल्डर्स। रेज योर हैंड्स इफ यू गाइस आर गेटिंग इट। तुम्हें पता है किस बारे में बात हो रही है। नाउ देयर इज अ डिजाइनर व्हिच इज सिटिंग बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इनोवेशन, कि यू कैन रिलेट अ शेप टू अ प्रोडक्ट। सिमिलरली आई एम श्योर यू गाइस वुड हैव सीन इट, पैराशूट का जो ऑयल होता है उसकी बॉटल भी अभी आइकॉनिक हो गई है।
जो ब्लू सी बॉटल है, sort of you can immediately identify that and you know what it is. You know what it is. वो क्या है तुम्हें पता है. इवन ये डब्बे जो आते हैं, जो जिनको हम शायद सर्दियों में यूज करते हैं, ये भी आजकल आइकॉनिक हो गए हैं. So somebody is designing all these consumables और इनकी जो पैकेजिंग रहती है, इन सब का भी बहुत अच्छे से डिजाइन होता है. Just absolutely phenomenal the way these things are used. And इनके पीछे भी बहुत ज्यादा दिमाग लगा होता है. Lot of sort of things go into this thing. So for example, हमारी जो simple toothpaste की ट्यूब होती है, ठीक है, तुम्हें पता है कैसे बनती है, कैसे फिल होती है? See, it is just a cylindrical tube. ये बस एक cylindrical tube है. ये यहाँ पीछे से खोली जाती है. It's just opened up, sort of from this part, जहाँ पे मेरा माउस है, and it is initially open only. And then एक बार इसमें पेस्ट फिल हो जाता है, तो इसको बेंड करके इसके ऊपर सील लगा दी जाती है. It is heated so that it is sealed. And it is such an efficient process, which enables you to be able to sort of consume such a industrially manufactured product, जिसके लिए पूरी फैक्ट्रियां लगी रहती हैं. You can consume that product for 50 रुपए, 60 रुपए में तुम्हारा पूरा टूथपेस्ट आ जाता है और तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए महीने भर चल जाता है. So we are sitting upon on top of a lot of innovations. यहाँ पे कहीं पे आ नहीं रहा है, otherwise I would have showed you. ठीक है, चलेगा. I hope you guys got the point. तुम्हें पॉइंट तो एटलीस्ट मिल ही गया होगा. ठीक है, चलो guys. So all these consumables, they are also designed products. Basically just एक fluid है, but उसका you make it into a product which could be put on shelves and which could be bought, which can be desired. ठीक है. अच्छा, मैं एक phenomena बताऊंगा, if you guys can relate. See, raise your hands if you guys have some particular, I don't know, toothpaste तो पता नहीं क्या होगा, or some sort of a cosmetic, sort of a face wash or some particular thing which you are really passionate about, which has really worked for you. क्योंकि तुम्हें बहुत मुश्किल से मिला था, but जब वो खत्म हो जाता है ना, तो you bear in mind that you have the next bottle ready. Raise your hands if you guys can relate to this phenomena. यार मुझे वही चाहिए, मुझे इसके अलावा मेरे लिए मेरी स्किन पे वही काम करता है. Got that, guys, got that. So this kind of passion can, a product can enable into you, and you can be responsible for such products which enable, sort of such passions to be, sort of invoked in consumers. You can be a part of such industries. Even industrial plants can be designed. जो हमारे industrial plants होते हैं, उसमें भी ergonomics की जरूरत होती है, उसमें भी safety की जरूरत होती है. किसी बंदे को दिखाई देना चाहिए, मान लो there's some certain pipe which is clogged, so you should be able to make out. So there are sensors out there which are giving out a lot of information, and there are people out there who are designed, sort of who are trained to read such information, which is making the entire plant working, sort of in a proper manner, and it can enable us the lifestyle, which we are living in right now. And there are a lot of stock items, जो plastic की sheets वगैरह आती हैं. So how many guys have you 3D printed or done laser cutting any time in the past? कभी laser cutting वगैरह की है? So you guys would relate to these sheets, acrylic sheets, MDF sheets. ये कभी की है? You done that? Got that, guys? Perfect. So there are a lot of objects which enable that. जब तुम प्लास्टिक की शीट्स पे कटिंग करते हो, तो वो जो शीट्स है, those itself are very well designed objects. In fact, तुम जब 3D प्रिंटिंग करते हो, तो have you seen that wire जो कि तुम्हारे 3D प्रिंटर के अंदर फीड होता है? Raise your hands if you guys have seen a wire. एक स्पूल आता है 3D प्रिंटर में फीड होने के लिए.
Yes, guys, got that. Perfect. So even those are designed objects. वहां पे भी किसी जगह डिजाइन हो रहा है. Somebody is earning millions of dollars just by making those things. ठीक है? Then there are a lot of designers which create these one-off artistic works. अच्छा, raise your hands if you guys were thinking about going into architecture at one point. ये आर्किटेक्चर के बारे में मैंने सोचा था. अभी तो मेरी इच्छा नहीं है, बट मैं एक बार दिमाग में था मेरे कि आर्किटेक्चर भी करेंगे. अच्छा, can somebody tell me who designed this particular, sort of? पहली बात तो कोई गेस कर सकता है ये है क्या? Can somebody guess what you're looking at? Any guesses? Chat box में वीडियो डाल दो. गेम सेंटर. नहीं. It definitely looks like one, a very futuristic one. Thank you for contributing, but नहीं. Keyboard. Someone said Nope. keyboard. Nope, guys. Nope. Kind of a control See, panel. See, it's a control panel, but it is a control panel for something. See, I'll tell you guys, we don't have a lot of time. See, guys, ये एक किचन टॉप है, टेबल टॉप. किचन में जहाँ पे हम सब्जियां काटते हैं, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, जहाँ पे हम सिंक रखते हैं, ये वो टेबल टॉप है. एंड गेस हु इज द डिजाइनर फॉर दीज थिंग्स? इसका डिजाइनर कौन है? गेस करो. How many of you guys have you heard of Zaha Hadid? Zaha Hadid का नाम सुना है आपने? Raise your hands. Got that, guys. So many of you. Good to see you guys. Good to see you guys. And welcome to Anant. I really, sort of love when we have such well-informed batch coming in. So, guys, this is a one-off artistic product which was designed by Zaha Hadid. Somebody asked Zaha Hadid to design a kitchen, sort of a top, जिसके अंदर sink रहेगा, जिसके अंदर you can have a induction stove, which can have some sort of a screen, and which can have some sort of, sort of embedded lighting as well. तो उन्होंने डिजाइन किया था. एंड दिस इज sort of an artistic work. इनकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा होती है. इफ यू आर एबल टू गेट अ sort of a senior designer or a very famous designer, a star designer to design something for you, you can really earn a lot of money. This is also one such product which is more or less an artistic product. कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट पहले देखा है? And you can tell me the name and the designer for this thing. कौन बता सकता है मुझे कि इसका डिजाइनर कौन है, ये प्रोडक्ट क्या है? बताइए. एनीबॉडी? प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड टेल मी. जूसी सालिफ. यस, दिस इज कॉल्ड जूसी सैलिफ. और ये सिंपल नींबू को निचोड़ने के लिए बनाया गया था. एंड इस पे कोई जो लोग इसको खरीदते हैं वो लोग इस पे नींबू शायद एक या दो बार ही निचोड़ते होंगे. बट दिस इज सच एन आइकॉनिक प्रोडक्ट. इट हैज सच अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग शेप that people use it as a statement about their particular choices in products. Getting it? So इस तरह के products कैसे use होते हैं? This is also one such product. Can somebody tell me what is who is the designer for this product and what this product is? This product is designed by a designer called Mark Newson. Has anybody heard of Mark Newson? Raise your hands if you guys have heard of Mark Newson. Very famous designer. He was working as a designer for Apple some time back. Thank you so much. Please lower your hands. Thank you so much, guys. And this is a chair which is called Lockheed chair. It was commissioned by Lockheed Martin. And this company. Who can tell me what Lockheed Martin makes? There's a company called Lockheed Martin. Can somebody tell me what Lockheed Martin makes? See, Lockheed Martin is in the business of manufacturing weapons. And they commissioned a designer called Mark Newson to design a chair for them, which would, sort of remind people of how the airplanes are made. जैसे एयरप्लेन की जो बॉडी बनती है वो भी मल्टीपल शीट्स ऑफ मेटल से बनती है. बट द वे दीज एंटायर ऑल दीज शीट्स ऑफ मेटल आर फ्यूज टुगेदर, इट्स ऑलमोस्ट मैजिकल टू लुक एट. तो उन्होंने ऐसी एक चेयर बनाई थी. अब मुझे पता नहीं इस पे लोग कितने घंटे बैठ पाएंगे, गिर जाएंगे. बट लेट मी टेल यू दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव डिजाइन ऑब्जेक्ट्स एवर सोल्ड. इट्स सोल्ड फॉर अराउंड
2.4 million pounds during an auction in Philips, sort of in 2015. Okay. So it became the most expensive product or object sold by a living designer, back then. में नाम भी लिखा होगा, Lockheed Lounge and Mark Newson यहाँ पे लिखा हुआ है. So you can, if you build your careers in the right manner, you can have your own voice in design, and you can also create such objects. Last but not the least, you can choose to be a designer for, these transportation objects. Now the transportation, obviously, तुम्हारे दिमाग में पता है, you already know about that. So how many of you guys have you seen Vespa? Vespa जो गाड़ी आती है, Vespa देखिए. You've seen Vespa? How many of you guys absolutely love the shape of that? इसका डिजाइन ना बड़ा क्यूट लगता है. It's a beautiful design. एक तरफ एक्टिवा खड़ी है, एक तरफ वेस्पा खड़ी है, तो तुम लोग शायद वेस्पा की तरफ जाओगे. Raise your hands if you guys can relate to that. Got that? See, Vespa is a product of Italian design, and absolutely beautiful product, and so that is the kind of emotion that people can have towards their own vehicles. Please lower your hands. Thank you so much. And just like people love a lot of objects in their lives and they can't live without it, people can't live without their transportation objects as well. उनका स्कूटर उनके लिए प्यारा होता है, उनकी कार उनके लिए प्यारी होती है. कुछ लोगों से उसमें बस में जाना होता है, तो even buses and all these objects, mass transportation objects are also designed objects which are designed by some designer. ठीक है. हमारे जो लोकोमोटिव्स वगैरह होते हैं, हमारे जो एयरप्लेन्स होते हैं, वो भी किसी न किसी डिजाइनर के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं. And you can be a part of that as well. अभी आजकल एक नए तरह की sort of transportation devices आ रही हैं. In fact, a lot of people say that अगले 5-6 सालों में, these are gonna get more and more popular. Who can tell me what this device is? An autonomous vehicle. Yes, perfect. So this is an autonomous vehicle जिसके चारों तरफ cameras लगे हैं, and it's a new kind of a vehicle which is coming, which a lot of people say might replace the regular vehicles which are driven by human beings. अभी this is one such vehicle. This is a vehicle by a company called Zoox. जिसकी testing यहाँ पे चल रही है, and Zoox is a company which was bought by Amazon. Amazon ने उसको खरीद लिया है, and they are trying to automate the deliveries of all these groceries और जो भी वो बेचते रहते हैं, अपने सामान की डिलीवरी के लिए वो लोग इस तरह की चीजों को टेस्ट कर रहे हैं. So this is a very upcoming field, and if you choose and if you are good enough, you can be a part of such teams which make such objects. Now, one of the challenges of making autonomous vehicles is people don't trust them. कि यार इसमें कोई ड्राइवर ही नहीं है, एक्सीडेंट हो जाए तो कौन ध्यान रखेगा, ये किसी को चल दे तो. People don't trust them. So to make them trustworthy, one of the challenges that the designers had to deal with is how do you make it likable by the general public? All of you guys can see that this has a cute face. Those you guys can see that this has a very cute face. खूबसूरत आंखें हैं, प्यारा सा चेहरा है इसका, and you can trust it. Raise your hands. Who else? Perfect, guys. Perfect. So this is a a very clever intervention by a designer who wanted this object to be trusted. इसलिए तुम लोग अगर आज autonomous vehicles को देखोगे ना, तो वो ऐसे ही cute form में आ रहे हैं, बड़े बड़े cute होके आ रहे हैं. Let me show you a few more. कितने लोगों ने Google के autonomous vehicles देखे हैं? So guys, raise your hands if you guys find this incredibly cute. अगर तुम्हारे सामने से बैठने का मौका है, इसमें बैठने का मौका आएगा, तो you will not miss that. Got that, guys? Got that. So, are you guys getting the challenges with designers deal with and what they come up with? ठीक है? So ये सारे हमारे काम होते हैं. We make technology more accessible.
We make technology go into the homes of people. We make objects desirable, and objects can be, all these technological objects, and they can also be, sort of all these favorite apps. जैसे जो आजकल डिजिटल apps वगैरह आ रही है, तुम्हारी favorite apps, so including this Google Meet app on which जिसमें तुम लोग मुझे सुन रहे हो. So all these apps are also designed by some designer like you and me, who are also product designers. So companies like Google keep hiring designers, sort of, and you can be a part of such group. So that was more or less it from my end. We can have a few question and answers. मेरा इतना ही presentation था. ठीक है? Guys. Yes, guys. Now you can maybe ask me questions and I can answer a few questions. Anything and everything at all. बताओ. Tell me. Best would be you write the question in the chat box, because if you unmute then you are question, then there would be chaos. So better you write your questions in Yep, the guys. chat box. So please write your questions in the chat box. I would love to have a look at it. Okay. बताओ. Tell me. Sir, in the meanwhile, I would request you if you can show them your creative which you prepared as a part of portfolio for NID. Thank you so much for asking, Abhishek. So I'll show you my work. The work which sir is showing is the part of portfolio which he showcased during his interview at NID Ahmedabad for the master's admission. And sir, if I'm not wrong, you got the most marks in that. Yep. So, I got 40 out of 40 in portfolio and interview. Yes. So yeah, maybe you guys can check it out. Just a second. Keep writing your questions in the chat box. We'll see sir's work and then we'll start taking the questions. Yes, guys. So guys, if you don't have an account on Behance yet, I invite you guys to build up an account on Behance. This is a website called behance.net. And please build an account. As a designer, it might be necessary, almost necessary. तुम्हारे portfolios वगैरह यहीं पे बनेंगे. And here we're coming to our my portfolio, sort of. तो गाइस ये मेरा काम है, स्पेशली 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 प्रोजेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग क्रॉनिक्स, म्यूरिन एंड वन फर्नीचर डिजाइन, वन बीकन, वन स्वाइप, ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए थे बिफोर आई वाज गोइंग बिफोर आई वेंट टू एनआईडी में जाने से पहले प्रोजेक्ट्स वगैरह मैंने बनाए थे. आई वुड लाइक टू शो यू अ फ्यू ऑफ देम. So and what really triggered them, उनको क्या ट्रिगर किया था, I'll show you sort of these things. तो ये मेरे NID में एंट्रेंस से पहले के हैं, जब मैं डिजाइनर नहीं था, और डिजाइनर था भी मतलब, पर एडमिशन मेरा नहीं हुआ था. ठीक है. So probably in your state, आज जिस स्टेट में तुम लोग आ रहे हो उस तरह मेरा ये काम था. So as you can see 2012 का मेरा ये काम है. And so this thing which is appearing in front of you, थोड़ा थोड़ा अभी आ रहा है. This is a mouse, as you can probably make out. See, back then I used to watch a lot of movies on my beautiful desktop, and मैं कई बार ऐसे पीछे ले बैक होके movies देख रहा होता था. Sort of कई बार मुझे वॉल्यूम कम करना होता था, मूवी को पॉज करना होता था. तो मुझे लगता था कि यार how do I do that? Why is there no remote control for this thing?
Now I knew that अलग से remote control आते हैं, but then why is there no remote control in my wireless mouse? Now my wireless mouse can communicate with my my computer, but उसमें pause करने के लिए मुझे VLC player पे छोटा सा pause का बटन ढूंढना पड़ता है, वॉल्यूम के लिए राइट साइड में नीचे जाके मुझे वॉल्यूम का बटन ढूंढना पड़ता है, एंड आई जस्ट फाउंड इट ऑल टू बी वेरी स्टूपिड. So I built and designed a device which would make all of that easier. So this device would act almost like a remote at the bottom of your sort of mouse, तुम्हारा जो wireless mouse है, and with which you can change lights, you can change volume, and you can mute things. It can act as a laser pointer as well, and you can have music controls in that. So ये मैंने एक प्रोडक्ट बनाया था back then when I was thinking of these things. So yeah, this was one of the products which I designed back then. So ये थोड़ा बहुत ये मेरा काम था, and I'll share this with you. तुम्हें ज़्यादा अगर देखना हो तो you guys can probably look at that. Then one more thing which I built was this watch. ये watch बनाई थी. से मुझे अपने हाथ पे कुछ भी बांधना पसंद नहीं है. I don't like watches. But I can probably wear rings. तो मैंने एक ऐसी वॉच बनाई थी जो कि एक रिंग में थी. So this is a ring which you can wear on your on your hand, on your fingers, and but it is not just that. It is not just a cool idea. अब इतनी छोटी चीज है, उसमें तुम उसको तुम चार्ज कैसे करोगे, उसमें तुम्हें अलार्म मान लो लगाना है, वाइब्रेटिंग अलार्म लगाना है, तो वो तुम कैसे करोगे? How it will really function? You have to design the entire thing. This is something which I designed long back. I was really good at 3D modeling, so I designed this with using all these skills which I had. And you had to design a lot of other things. जैसे मान लो ये प्योर अगर राउंड होती तो ये जो फेस है इसका जहाँ पे टाइम दिख रहा है तो वो कहीं भी घूमता रहता. कई बार वो उंगली के साइड में होता है, कई बार उंगली के पीछे होता. So I designed the shape to be a certain hexagon. यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया था कि इसके जो हमारे फिंगर्स रहते हैं उसके बीच में इसका सर्टेन जो एंगल है वो आ जाएगा, और इस तरह से इसका जो आवर्स एंड मिनट्स वाला फेस है वो हमेशा ऊपर की साइड रहेगा. So all these things I thought about, and I also thought about sort of charging mechanisms for this thing, a charging pad for this thing, and yep. So that was two of my projects. I just share this with you in case you guys want to have a look. You can have a look at more here. Okay. So I'll. We have questions. Yep. Are you seeing, or should I read it for you? Maybe I'll take them. Okay. Chalega. Okay, so we have a question from Gunj. At this moment, how can we develop the skills required for becoming a product designer? See, I'll tell you the skills that are required for becoming a product designer, and maybe you can practice that. Okay, so what you can do is two of the most important skills as a product designer which you can develop is being able to express your ideas, being able to come up with ideas, and being able to express your ideas. So what you can do for both these things, तुम इन दोनों के लिए क्या कर सकते हो? I'll share with you. I'll give you all of you guys a little starter pack, which maybe you guys can sort of follow through अगर तुम्हारा interest है तो. The first thing which I invite all of you guys to probably read is this book called Design of Everyday Things. This is a book by a guy called Don Norman, one of world's top design thinkers. And basically बहुत costly किताब नहीं है. You can get it, I think, for $300 or $350 on Amazon. ये पता नहीं अभी इतनी costly क्यों हो रखी है. I'm not very sure. But this is one book which you can get started, with reading, sort of, if you want to, sort of become a good designer. If you want to start thinking like a designer. फिर इनकी और भी किताबें हैं जैसे emotional design, and you can also read this book by Tom Kelly, who is the founder of IDEO, sort of. It's called Creative Confidence, Unleashing the Creative. हमारा interest product design में है या नहीं? I invite you, all of you guys who want to be designers, to sort of read this book. In fact, जब मैंने अपना पहला studio join किया था, जब when I was still working in the corporate, तो हमारे studio के अंदर जो भी बंदा join करता था, उसको पहले दिन का gift होता था ये. This book used to be gifted to all the designers who used to join this.
Apart from that, so this probably will help you in being able to come up with good ideas and think like a designer. The second thing you can do is about being able to express your ideas. And two particular things that you can work on is, one is sketching. And there are a lot of channels which you can follow for that. आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे channels हैं जो कि तुम्हें online सिखा देंगे what product design sketching is all about. So maybe you guys can sort of go and check out some of these channels. Sketch Monkey is one of the very popular channels, the Sketch Monkey. So maybe you guys can follow through on that, and you can follow some of these channels. इनको देख देख के सीखो. And हम लोग भी obviously classes वगैरह तो होंगी, but then you can also learn from these these stalwarts जो अच्छे अच्छे channel खोल के बैठे हैं. ठीक है? So really sort of you guys can learn from these things, and sketching अपनी अच्छी कर लो, prototyping अच्छी कर लो, learn how to use materials. So maybe you guys can buy some wood, and you can get some basic sort of woodworking tools. I'm pretty sure simple सा set 1000-2000 का आ जाएगा, and you can start working from your own hand, and you can start making things. ठीक है? I hope that helps. Gunj, was that useful for you? Gunj, are you there? Yes, sir. Thank you. Okay, perfect. So I'll move on to the next question. Why maximum products were in the form of a box? See, because box is the easiest to make form. हमारे घर रेक्टेंगुलर क्यों होते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स रेक्टेंगुलर क्यों होते हैं, हमारा फोन रेक्टेंगुलर बक्सा क्यों है? बिकॉज उसके लिए डिजाइन करना और उसको डिजाइन करना सबसे आसान है. एंड आई इनवाइट यू टू स्टडी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, sort of study those processes. देन आई थिंक वहां से वो आंसर तुम्हारा ऑटोमेटिकली इमर्ज होके आ जाएगा. ठीक है? as human beings we find it very easy to deal with rectangular objects, rectangular sort of forms. It's very easy, very simple, and we have designed a lot of we already have a lot of manufacturing techniques with which we can sort of make such objects. So maybe you guys can sort of see more of manufacturing techniques. तब इसका सवाल का जवाब तुम्हें actually मिल जाएगा. You'll actually get that. ठीक है? So I hope that answers your question, Pratyush. The answer lies in our manufacturing limitations. ठीक है? We can come up with a lot of crazy designs, but वो बनेंगे नहीं. या बनेंगे तो see, who wants a 15 करोड़ का लैपटॉप? Nobody wants a 15 करोड़ का लैपटॉप. हमारे लैपटॉप्स रेक्टेंगुलर है, इसीलिए ये मास मैन्युफैक्चर हो पा रहे हैं. अगर ये रैंडम फूल की शेप के होते, पहली बात तो कोई यूज करता नहीं, करता तो भी उसकी प्राइस जो है वो इतनी कॉस्टली हो जाती कि कोई उसे खरीदता नहीं. फिर डिड यू गेट दैट? Yes, sir. ठीक है? सो लुक इनटू द मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशंस, जिनकी वजह से हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हमारे घर बॉक्स के फॉर्म में होते हैं. ठीक है? So that was your question, Pratyush. Shreyas is asking how a product designer works with automobile designer. See, product designers, automobile designers, interior designers, textile designers, all of them work together to make a car. Say एक कार के अंदर के इंटीरियर्स भी होते हैं, एक्सटीरियर्स भी होते हैं. I know a few people sort of who are working in the industry. I know somebody who is designing even Ferraris. Ferrari की डिजाइन जो हाउस है उसमें भी बंदा काम कर रहा है, उसको मैं जानता हूँ. He was one of my seniors in back in NID. So you can do that. See, mostly when you are going in as a designer, as a junior designer in these companies, you are given a task to design something very very small. तुम्हें probably जो गियर होता है उसका डिजाइन दिया जाएगा, या फिर डैशबोर्ड में 4 बटनों का डिजाइन दिया जाएगा, या फिर रियर व्यू मिरर का डिजाइन दिया जाएगा, या फिर टायर के ऊपर जो काउल लगता है या फिर उसकी वो जो डिजाइन लगता है उसका डिजाइन दिया जाएगा. And that is how you get started in these products. And you can work as a product designer sort of in these companies. In fact, I'll tell you one of the persons who was working in these companies. I'll share with you his portfolio. His portfolio even I find very inspiring. He's working right now for Volvo design team in Europe. वो यूरोप में स्कैंडिनेविया में कहीं पे काम कर रहा है अभी. The name of the person is Gaurang Nagre.
I'll share with you his portfolio. ये उसका काम है. तो देख लेना. If you guys want to work for these automobile companies, if this is one of your passions, then तुम्हारा काम इस लेवल का होना चाहिए 4-5 साल में, तब जाके तुम लोग अपनी फेवरेट इंडस्ट्री में काम कर पाओगे. I'll mention the name of the books again. Gayatri, you asked. The name of the books are one is Creative Confidence. Can somebody type in the chat box? Creative Confidence is one, and the second one is Design of Everyday Things, so that everyone has it. Okay. Thank you so much. Thank you so much, my friends. Okay, guys. So so that is how Product Designer works with an automobile designer. So I think I dropped the link. मैंने इसका link drop कर दिया, right? Yep. So you can have a look at his portfolio. किसी एक page पे maybe I'll show you one or two of his pages. You guys can get a sense of what really a designer does. इसमें तुम्हें मैंने वो car दिखाई थी, right? It was designed to be so cute. So similarly, the skills which you learn as a product designer, they're the same skills which you need to design, transportation. Transportation is just generally a really complex object. So बहुत सारी चीजें साथ में काम कर रही होती हैं. But if you guys are good enough, maybe you guys can have a look at that. I invite you guys to check out this portfolio. Gaurang का portfolio बहुत ही प्यारा है. It's something which he made back in 2013, which I found very inspiring when I was studying there. जब मैं इसकी study कर रहा था तो मुझे बहुत पसंद था. इसको देखना तुम लोग, and maybe you guys can also be inspired by that. ठीक है. So we'll go to next few questions. What kind of laptop specifications do we want in college for product designers? See, I invite you guys, and you know what? See, I understand where this question is coming from. जब मुझे भी कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो मैं भी अपने मॉम डैड के पीछे पड़ा था कि मुझे इतना बढ़िया फैंसी लैपटॉप चाहिए, 1 लाख का लैपटॉप चाहिए, 1.5 लाख का लैपटॉप चाहिए, इतना अच्छा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे सर ने बोला है और मेरे काम आएगा. See, but let me tell you something, very straightforward way. Get something which is in your budget. कोई extraordinary laptop लेने की जरूरत नहीं है. When you earn, you should be able to, get something. Get something which is modern. Get something which has a basic graphics card, at least 1 GB, 1.5 GB का तुम्हारे पास standard graphics card कोई सा भी मिल जाए. And then, get something which has a larger screen थोड़ा बड़ा हो. आजकल 13 इंच के लैपटॉप भी आ रहे हैं, which is portable, but then अगर तुम्हें 3D मॉडलिंग करनी हो, या फिर तुम्हें अगर रेंडरिंग करनी हो, या फिर ऑनलाइन स्केचिंग करनी हो, डिजिटल स्केचिंग करनी हो, तो वो इतने यूजफुल नहीं रहते हैं. पर्सनली यू कैन ऑल्सो गेट लैपटॉप्स दीज डेज जिनमें स्केचिंग इनबिल्ट रहती है. जैसे मेरा जो ये पर्सनली जो मैं अभी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, इसके अंदर यू कैन स्केच ऑन दी स्क्रीन इटसेल्फ. So maybe you can look for such laptops. आजकल बहुत cheap आ रहे हैं. Or maybe you can use an iPad for sketching, digital sketching, and you can use this laptop only for 3D modeling and rendering purposes. But don't go beyond 60, 65, 70,000. This is my invitation to you guys. ये टेक्नोलॉजी जितनी तुम कॉस्टली लेते हो ना, उतनी जल्दी पुरानी होती है. Once you are working, in the industry, you should be able to get something which suits you professionally. तब तक ज्यादा पैसे खर्च मत करना. Did you guys get that? श्रेयस सॉरी, साइंस मजा कौन है ये? ठीक है, चलेगा. So I hope that answered your question, my friend. Whosoever you are, does that answer your question, my friend? चलेगा? Anyway, so 60-70 हजार से ज्यादा मत जाना, and that should help. What is a website for portfolios? So there are two kind of websites which are very popular. One is Behance, one is Dribbble. Dribbble पे मत जाना अभी. Dribbble is very visual design oriented. Nothing wrong with that. But for a more thoughtful design, you can check out Behance. Behance पे जाके you can check out people's work. So link already मैंने Behance का अपना डाल रखा है. So check out this website for lot of designers have their own personal portfolios. तो उनके तुम नाम सर्च करोगे या उनको इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो वो अपना काम इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट करते रहते हैं. So you can find them from there. ठीक है. Bhavya, your question is which 3D rendering software does Ananth provide for product designers? See, we guys generally provide a software called Fusion 360, which people can use. It's called Fusion 360.
इसी का एक इनबिल्ट रेंडर आता है which we guys teach students. We also teach a software called SolidWorks, which is very popular software for in fact मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा होगा अगर मैं ढूंढूंगा तो यहाँ पे पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर आई थिंक SolidWorks you can find on my desktop. ये नीचे छोटा सा आइकन दिख रहा है तुम्हें, ये SolidWorks का आइकन है. दिस इज SolidWorks sort of which is on my desktop. अभी मैं इसकी क्लासेस ले भी रहा था. I was trying to teach it to a few students from second year in product design. So and then for rendering we generally teach KeyShot. KeyShot करके software आता है. We guys teach that. But you guys can try out Blender as well. Blender is one of the free softwares which you guys can use and learn, and sort of you can make your things in. ठीक है? So these are the two softwares which probably you guys can learn on your own, and maybe you guys can find useful. ठीक है? Does that answer your question, my friend? KeyShot, SolidWorks, and Fusion 360. Bhavya, sorry, Shreyas. Shreyas, is your question answered, my friend? So I hope it is. Then which software did you use for designing this mouse? See, I used SolidWorks, which is something which I personally love. Very easy to use, very approachable software. I use SolidWorks to design this software entirely. और मैंने SolidWorks के अंदर ही इसको render किया था. So yep, this is what I used. Can a product designer work as a UI UX designer in Google or any other tech companies, or we need a specialization in? So a product designer can easily work as a UI UX designer because, in fact, back when I was at NID, most of the UI UX companies or companies like Google, ये सारी companies product designers को ज़्यादा prefer करते थे because we guys had a very fundamental understanding, comprehensive understanding of how products work and how the psychology of products works. In fact, UI UX designer जो लोग UI UX ट्रेन होते हैं या फिर इंटरेक्शन डिजाइन में ट्रेन होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा जल्दी डिजिटल डिजाइन में घुस जाते हैं. वो लोग फोटोशॉप में अच्छे हो जाते हैं, बट देन फोटोशॉप इज नॉट डिजाइन. So this is something which I have found even in our students. बहुत जल्दी अगर कंप्यूटर की आदत लग जाती है ना, तो it's generally detrimental to your education. But definitely, if you're trained as a product designer, you can work. In fact, मैं खुद Microsoft में काम करके आया हूँ, मैं खुद Samsung में काम करके आया हूँ, मैं खुद Adobe में काम करके आया हूँ. I was working there as a user experience designer, as a product designer, and these are all tech companies. Adobe कोई भी ऐसे कूलर या फिर टीवी नहीं बनाती है. सारे उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिजिटल हैं. But they chose to take me, sort of, and other people as well. ठीक है, तो you definitely can work as a UI UX designer at Google and any other tech companies. ठीक है, does that answer your question, Sandesh? Yes, sir. Thank you. Perfect. Yep. See, the parachutes classic bottles designers did only one design. So what happens when they accomplish that goal? See, not really one design. Initially, iterations हुए होंगे, but it is almost like that. वो जो पीला बल्ब आता है ना, that स्टैंडर्ड बल्ब जो आता है, अभी उसका डिजाइन फ्रीज हो गया. इतने इटरेशन हो गए हैं, इतना स्टैंडर्ड हो गया है कि उसमें ज्यादा कुछ करने का बचा नहीं. So that is what has come to a lot of these. They have reached a certain level where their functionality is optimal and they have become classic, and a lot of people recognize that. In fact, अगर तुम उसको चेंज करोगे तो लोग खरीदेंगे नहीं. People will get confused. That is why many of these things are very similar, and sort of ऐसे चीजें काम करती हैं. See, मैं सोचता था पहले कि यार ये जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दिस क्या नाम है उसका, वो दिस ठंडा कूल नवरत्न तेल, एंड sort of जो अमृतांजन बाम, विक्स वेपोरब, ये सारे जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इनकी पैकेजिंग चेंज क्यों नहीं होती है, इनका नाम चेंज क्यों नहीं होता है? ये जैसे पहले डब्बों में आते थे अभी भी वैसे डब्बों में आते हैं. So then I realized that these guys have a little iconic following of themselves, and people don't want something which is already working to be changed. Okay, so that is why a lot of these objects are similar, जो iconic objects हैं.
ठीक है, does that answer your question, Hriday? Yes, sir. It does. ठीक है, perfect. Thank you. Gunj, thank you so much. You like my projects. Thank you so much. I have mentioned the name of the books again. And should we buy a Mac or iPad as Fusion 360 only works on Apple? See, this is wrong. Fusion 360 works on Windows and Mac both. दोनों पे काम करता है. तो ये ऐसा सही नहीं है. In fact, I would prefer that you guys buy Windows क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जैसे SolidWorks does not work directly on Mac. तो तुम्हें उसके लिए पैरेलल्स यूज करना पड़ेगा या कोई तरह का तुम्हें might have to emulate Windows so that you can run these software. So at least अपने education के लिए, if you guys don't want to face a lot of problems, do not go for a Mac. अभी वैसे भी Mac में M1 chips आ रहे हैं. M1 chips के साथ software compatibility इतनी अच्छी नहीं है. They perform very well, but there very few software are working with them. अभी एप्पल के जो sort of भाड़े पे खरीदे हुए डेवलपर्स रहते हैं वो तो चलो डेवलप कर लेंगे, but then majority of the people who are using Windows as a development platform, they might not develop software which is specially designed for a particular processor. So think about that. Maybe you guys would want to buy Windows. I personally love Macs. मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है. But then मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है. Even जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा था who used to face problems because they got a Mac और फिर फाइनली उसको सेकेंड हैंड बेच के या फिर किसी भैया को दे के sort of एक विंडोज लेके आते हैं उनसे. Are there any short-term internship, summer internships in product industrial design? So many of them, so many. I invite you to go to LinkedIn and sort of just check out internships, summer internships करके search करना वहाँ पे, and you should be able to get sort of this thing. ये गौरांग का पोर्टफोलियो थोड़ा सा खुल रहा है. I want to show you few of his sketches. एक आध sketch में दिखा देता हूँ मैं, so that you get a understanding of the bar that is needed to go into transportation design. But two websites I want to tell you. One is LinkedIn and another one is क्या नाम था उसका यार? आ नहीं रहा है. वेबसाइट मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा. So maybe अच्छा, how many of you guys have you have your accounts on LinkedIn? LinkedIn पे कितने लोगों के अकाउंट है तुम्हारे? Raise your hands. Okay. So build an account on LinkedIn. LinkedIn is one of the very popular portals for professional work. तो एज अ प्रोफेशनल तुम लोग को यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो एक इंस्टाग्राम पे तुमने आर्ट अकाउंट बनाया है, यहाँ पे भी एक अकाउंट बना लो एंड ट्रीट इट एज अ प्रोफेशनल अकाउंट. इसको एक प्रोफेशनल अकाउंट की ट्रीट करना एंड अच्छे से क्यूरेट करना, अच्छे से बनाना इसको, एंड मे बी यू विल फाइंड इट यूजफुल इन द फ्यूचर. ठीक है. सो यप, यहाँ पे ऊपर एक सर्च बॉक्स आता है. इन द सर्च बॉक्स यू कैन sort of enter and search for anything you feel like. Just a second, थोड़ा slow हो रहा है आज लोड होने में. Just a second. So ऊपर सर्च बॉक्स आ जाएगा एंड यू कैन सर्च फॉर sort of समर इंटर्नशिप्स डिजाइन या फिर डिजाइन या फिर प्रोडक्ट डिजाइन इंटर्नशिप, समथिंग लाइक दैट. ऑटोमेटिकली आ गया है, देखो. एंड देन यहाँ पे तुम लोग सर्च करोगे तुम्हें बहुत सारा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. यू कैन गेट समथिंग sort of easily. You'll find people who are doing internships. You can find job results.
यू नो सॉर्ट ऑफ यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो लोग यू नो सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन इंटर्नशिप्स यू नो सॉर्ट ऑफ हु आर लुकिंग फॉर इंटर्न्स. थोड़ा तुम्हें सर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर फिल्टर्स वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, बट यू शुड बी एबल टू गेट समथिंग. lot of companies like Google, they have their internships open as well. इंडिया में यहाँ पे आ रहा है, you can get things abroad as well. उसके ऊपर सर्च बॉक्स में you can search for worldwide and you can get all these you know world class internships. So see, look at this, you know, Apple is looking for a product design intern. So Apple के अंदर available है. You can get an internship in Accenture, Wix.com में product designer की internship available है. You know, UX design and research के लिए Redmond Microsoft में available है. Zoom is also looking for interns. Electrolux is looking for interns. Bang and Olufsen. How many of you guys know about Bang and Olufsen? किसी को पता है Bang and Olufsen के बारे में? World class speaker company, world class. They're also looking for interns. So maybe you guys can, you know, sort of go and make world class speakers for them. Who knows? OLX is looking for interns. ठीक है? So did you guys get an idea? किसने सवाल पूछा था? Was it clear? थोड़ा clear हुआ? How to find internships? किसने क्वेश्चन था? Swapna. Yeah. ठीक है, स्वप्ना has said thank you, तो I think she has got to see. But ये उस बंदे का काम है. I just want to show you his work. Beautiful, beautiful, exceptional work. I really invite you guys to check out this portfolio. इसको check out जरूर करना. बहुत slowly अभी open हो रहा है. मैं नहीं जा रहा अभी इसमें. But this is how you guys can do that. So these are a few objects which are made by Bang and Olufsen. ये speakers बनाती हैं, and their speakers are extremely costly and extremely, you know, sort of they have a fan following of their own. अपनी इनकी अलग ही fan following है. Beautiful, beautiful designs, and you can be a part of their team as well. Bang and Olufsen. ठीक है? So with that, we come to an end to this session. It was lovely meeting you all. Hope to see you guys sometime soon in some other sessions like these. Abhishek, we can proceed with the ending ceremony. Thank you so much, Puneet sir. I hope all of you have learned a lot from Puneet sir today. So, in case you have any query related to product design, you can reach me out. You all have my WhatsApp number with you all. I will forward your query to Puneet sir, and once he replied, I will forward it to you again. Again, thank you so much. Wait for the next week's webinar session. Information and registration link will be shared with you soon. Thank you so much. Happy weekend. Stay home and stay safe.